Panchakarma is a core concept and Shodhana therapy in Ayurveda. The term Panchakarma means 5 treatments or 5 actions and is designed to detoxify the body and restore the 3 doshas which are Vata, Pitta and Kapha. The 5 main Panchakarmas are Vamana, Virechana, Basti, Nasya and Raktamoksha. Shirodhara is also one of the famous Panchakarma therapies. Shirodhara is a classical Ayurvedic therapy that involves the gentle continuation of warm medicated oil or other therapeutic liquids on the forehead. ऋषि मुनियों ने सालों पहले कहा है कि एक व्यक्ति की कंपैरिजन एक वृक्ष से की जाए तो मूल वृक्ष की ऊपर की तरफ होता है और शाखा नीचे की तरफ। अगर मूल पे ही प्रहार किया जाए तो शरीर के सभी रोगों को आसानी से जीता जा सकता है। जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, वह सभी रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा शिरोधरा है। आपका नाम मुझे आपको शिरोधरा के बारे में पूछना है। शिरोधरा के पूर्व कर्म क्या है? शिरोधरा के पहले क्या करते हैं? पेशेंट को और जो शिरोधारा करता है अटेंडेंट दोनों को साइलेंट मेंटेन करना पड़ता है। मोबाइल रहेगा तो दोनों का साइलेंट मोड पे नहीं तो स्विच ऑफ करेगा। और दूसरा शिरोधारा पेशेंट को सजेशन देना पड़ता है। बाहर जितना भी गड़बड़ मेन कंसंट्रेशन शिरोधारा जो थेरेपी होता है प्रोसीजर होता है उस पर कंसंट्रेशन करना है। जब स्टार्ट करते हैं तब कान में कॉटन डालना पड़ता है और आँख पे कॉटन पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप पेशेंट को यदि वो भगवान के हेल्प करता है बिलीव करता है तो जब मैं शिरोधरा इज गोइंग ऑन तब उनको उनके कुल देवता या कोई इष्ट देवता है उनका नाम स्मरण करने को बोलता है। उसको बेटर रिजल्ट ऐसा मिलता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी रहता है और जो ज़्यादा गर्म रहता है वो भी ज़्यादा महसूस नहीं होता। ज़्यादा गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म ऐसा डालते नहीं है लेकिन कंसंट्रेशन इसके में नामस्मरण होता है उसके ऊपर होता है। ऐसे ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं छोड़ा जाता। उस शिरोधरा पात्र होता है ना, उसमें सिर्फ ऑयल होता है और कुछ भी डाल सकते हैं। डिपेंड ऑन पेशेंट्स उसको क्या है वो डॉक्टर सजेस्ट करता है। और क्या क्या और शिरोधरा कोई भी प्रोसीजर हो ऑयल डायरेक्ट गर्म नहीं करना पड़ता। पानी लेना पड़ता है उसमें पानी गर्म करना पड़ता है। इनडायरेक्ट गर्म करना पड़ता है मगर वो पानी में रखना पड़ता है। प्रोसीजर खत्म हो कितनी देर तक है? डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन। मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट। और ख़त्म होने के बाद इसके बाद क्या होता है? ख़त्म होने के बाद पूरा तेल जो निकाला जाता है कंघी से और बाल को साफ किया जाता है। पूरा ईच एंड एवरी ड्रॉप निकाला जाता है। बाद में थोड़ा हल्का सिसोटी आईब्रो सेंटर है इधर से हल्का को मसाज करते हैं। बाद में धीरे धीरे ऐसा बालों को नीचे आना पड़ता है ऐसा ऊपर से नीचे। बाद में बिठा के पेशेंट को इधर से मसाज देंगे फुल हेयर। उसके बाद में जो बचा हुआ तेल है वो कॉटन से साफ करके निकल दें। These are the steps of Shirodhara. First, the patient is made to lie comfortably over the Shirodhara table. Then, the eyes of the patient are covered with a cotton pad and the ears are plugged with a cotton. Then, the Aushadhi Dravyas are made Sukoshna over the water bath. The medicinal liquid is filled in the Shirodhara Patra, which is placed above the forehead and moved such that the dhara flows from 41/2 anguli with uniform stream of pendular movements. Temperature of oil is maintained by reheating the oil collected during the procedure below the table.
After 30 minutes, oil is collected and stored in a bottle. The scalp is cleaned. Hello ma'am, my name is Kanisha Shankar. I'm from first year junior. I want to know about Shirodhara. So can you please tell me what is Shirodhara? Okay. So as you all are from this institute, so I will just explain the things which are going on in this institute. Okay. So Shirodhara we do for 40 minutes. Sometimes according to patients we do it for 30 to 40 minutes. Okay. So we have to do the Shirodhara from 6 angli. This is 4 plus 2. So how much this from this height we have to pour the dhara. What is dhara? Have you seen the pindi, means the pindi and the dhara of Shivalinga? So same dhara for the head we do it. So it is like sheath. So all the medicines what we give in the Shirodhara, it will give the cooling effect to your mind. सिद्ध जो भी ब्राह्मी तेल है वो यूज़ कर सकते हैं. देन घृत समयूज और दुग्ध और तक्रधारा इज वेरी 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 गुड एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर. So you can just see what is the how there is a different types how we there is a procedure of doing the takradhara, how we form the curd and then it is converted into takra and then it is a medicated takra and then we use it for the Shirodhara. So there are different mediums and we use for different kind of diseases. So that is Shirodhara and mainly the time according to Vatas, Pittas and Kaphas, we just for Kaphas little bit lesser time, for Pittas it all depends on the Vata and the time and the patient, mainly the patient and how the doctor advises for that patient. And what are the things we do before the Shirodhara and the Purva Karma? Purva Karma, there will be a Snehan sometime. Otherwise, you can take directly to the Shirodhara. Snehan. And Pashat Karma, after 2 hours we have to take the bath. Before that, no. Otherwise, all the effect will be gone. So after 2 hours we have to tie our hair and then we can have the bath. Otherwise, after 3 days, we can have bath. If there is a Takradhara, then we have to take after 2 hours. Yes? Thank you. आपणच नाही चलपाचें बी बंद जालें. पयलीं तो चलोन बी वयतालो डॉक्टरांनी. फर्स्ट टायम गेलो तो, सेकंड टायम आमी ताका धरून वचचें पडलें. आपुणूच बॉडी तेजी जावपा लागली, मुवमेंट करिना. हांगा पांयाक ताका सपोर्ट ना पांयाक, हांगा दुखता ताका. एक्सरसाइज सांगणारे हां शिरोधरा शिरोधरा कित्याक तकली बीन दुखता तेजी
श्वास मेंटॅलिटी सारखी जाता ती. मेंटली डिस्टर्ब जाता. ते पण आसा हां, ते मेंटॅलिटी माझी सारखी जाता ती. तर शिरोधरा स्ट्रेस रिलीव करून आमकां खूब हेल्प करता. तो स्ट्रेस रिड्यूस जाता. मागीर आतां मेंटली इफ आमी डिस्टर्ब जाता तर आमकां एक मेंटल स्टेबिलिटी गावता शिरोधरा करून. आनी शिरोधरा केल्यार मागीर इवन आमचे हेअर ग्रोथ खूब जाता. आमच्या स्किनाचे खूब बेनिफीट पडटा. मागीर ब्लड प्रेशर बी ना 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 पूण ब्लड प्रेशर आसल्यारूय ब्लड प्रेशर रिड्यूस करून खूब बेनिफिशियल आसा शिरोधरा. आनी मागीर हॉर्मोन्स बॅलन्स करपाक हेल्प करता. अशे थोडे तेजे बेनिफिट्स आसा शिरोधरा. सो आतां तेंच सांगता शिरोधरा अभ्यंग. ना ना सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आले फक्त पांयांक लागत ते उबो रावपाक त्रास जाता. देडच सुद्दां पांय बारीक जाता. आनी तो भिता पांय रावता. Benefits of Shirodhara. 1. It reduces stress and anxiety. The continuous flow of warm liquid induces deep relaxation, calms the nervous system, and reduces cortisol levels in the body. 2. It improves sleep quality by treating insomnia. Shirodhara can help regulate the sleep patterns by calming an overreactive mind and promoting restful sleep. 3. It enhances mental clarity and focus. It helps clear mental fog, boosts concentration, and balances the Vata dosha in the body, which is linked with movements and the nervous system. 4. It relieves headaches and migraines. The therapy soothes the head and nervous system, offering relief from tension and chronic headaches. 5. It balances hormones. By affecting the hypothalamus and pituitary gland through the nervous system, it may help regulate hormonal imbalances. 6. It promotes scalp and hair health. Herbal oils that are used in Shirodhara nourishes the scalp, reduces dandruff, and promotes hair growth. 7. It detoxifies the body. Shirodhara is believed to cleanse the mind and body of toxins, which is Amrit, aiding in overall rejuvenation. 8. It supports emotional healing. It helps manage emotional issues like irritability, anger, mood swings, and trauma by calming the mind. 9. It alleviates hypertension. By reducing stress and calming the body, it may help lower blood pressure. 10. It improves skin health. The therapy may improve skin texture and glow by reducing stress related to skin conditions. Filming this video has been an interesting experience for all the four of us. We got to witness Shirodhara and all its processes. We interviewed patients, which as first year students will definitely help us in the future. So making this project was a really fun experience as well as very knowledgeable as such, because we got to do the procedure on patients as well as talk to them, know their symptoms and the benefits that they got due to Shirodhara. While making this project, while performing the method on the patients, we have also seen that the patients relax and many of them do tend to sleep. So it was in total a very learnful experience. It was a knowledgeable experiment for all of us. We have learned a lot about Shirodhara. We have talked with the patients, even with the families, and we have got a lot of positive response from all of the patients.